Hello everyone, welcome all to Physics with Astronautics. So in this video we will discuss about the previous year question of cpet, that is of 2024, and basically this is the cpet is the entrance exam for the PG admission in Odisha. So as we have already discussed the first 10 question, so in this video we will discuss the further 11 to 20 question. Okay, so let's begin. That is here is our first question, that is a point positive electric charge Q is placed in air at the body center of a cube of size L. The electric flux over any face of the cube is equal to, and here are our options as you can see, and here our solution is like the positive electric charge Q is placed in air at the body center of the cube of size L. That is, we have a cube which has side L and a positive electric charge, that is plus Q, which placed just at the center. ओके, लाइक हमारे पास एक क्यूब है जिसका साइड L है और बीचों बीच में हमने एक प्लस Q चार्ज रख रखा है. तो यहाँ पे पूछा क्या है, what will be the electric flux? Okay, so we know the total flux through the surface of the cube will be equal to Q by epsilon naught, and flux over any phase, like in any one phase the flux will be Q by 6 epsilon naught, as we know that cube has 6 phases. Okay, so here the option C, that is Q by 6 epsilon naught, is the correct option. That is the right answer. Then, which of the following is the correct statement of the Carnot's theory? Option A says the entire heat energy received by a heat engine cannot be converted to mechanical energy. No. All reversible heat engine operating between the same two temperature limits have the same efficiency. Yeah, this is the correct one. You can read the option C and option D also. Then the Fourier transform of the Dirac delta function delta x is proportional to 1 by root x, proportional to 1 by x, independent of x, proportional to mod x. As we know, the Fourier transformation can be written as fk, that is we have a function of x and if we convert it into in the function of k, that is f of k. Okay, it will be equal to integration over minus infinity to infinity f of x e to the power minus I 2 pi kx dx. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है जो कि गिवन है डिराक डेल्टा फंक्शन, दैट इज डेल्टा एक्स. ओके, so f of k can be written it as integration over minus infinity to infinity delta x e to the power minus 2 pi kx dx. और हमें पता है कि the shifting property of the delta function is minus infinity to infinity delta x e to the power minus iota 2 pi kx dx can be written as delta x, and if we'll consider this part as f of x, that is f of x dx will be equal to f of 0. So in the place of x, if we will put the value 0, then f of x can be e to the power minus 2 pi kx, that is e to the power minus iota 2 pi k 0, like in place of x we have put 0 here, and we know that x to the power 0, y to the power 0, 1 to the power 0, 2 to the power 0, लाइक किसी भी फंक्शन का या फिर किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है. सो जस्ट लाइक दैट हियर f of k will be equal to 0, that sorry will be 1, that is the Fourier transformation or the Fourier transform will be independent of x. Then the commutator x d by dx is equal to, so here we have to find the commutator. Okay, so x d by dx can be written as x d by dx minus d by dx x. Okay, consider a text function f of x. हमने एक फंक्शन ले रखा है f of x आउटसाइड. ओके,
सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स। ओके, अब जब इसको हम ऐसे लाइक खोलेंगे तो फिर ये हो जाएगा एक्स एफ डेक्स एक्स माइनस हियर u इंटू वी फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स विच विल बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब जब हम इसको इसके साथ अगर हम रिलेट करेंगे लाइक इस दोनों फंक्शन को अगर हम इक्वेट करेंगे देन वी विल गेट दैट एक्स डी बाई डी एक्स का जो कम्यूटेटर होगा वो कितना होगा -1, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, देन a capacitor is connected in the feedback path of the operational amplifier circuit. The resulting circuit can act as, the options are a divider, a differentiator, a subtractor, or an integrator. So here the option B, that is an integrator, will be the right option. Here also you can see like integrator कैसे होता है, differentiator कैसे होता है, logarithmic कैसे होता है, anti logarithmic कैसे होता है, like हमें इनपुट में क्या चाहिए, फीडबैक एलिमेंट क्या होना चाहिए, और हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि इंटीग्रेटर है या फिर डिफ्रेंशिएटर है। तो फिर ये सारी चीज़ें आप इस टेबल के थ्रू जान सकते हैं। ओके, तो इस टेबल को एक बार ध्यान से देख लेना। Then the researcher's figure formed by the superposition of two orthogonal simple harmonic motion in the frequency ratio 2:1, that is omega 1 and omega 2 are in the ratio 2:1 has the figure 8, like उसका जो figure बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 8 बन रहा है। ओके, the phase difference between the two orthogonal simple harmonic motion is, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। देन the relation among the Young's modulus y, bulk modulus p, and the rigidity modulus eta of the homogeneous isotropic solid is, like आपको ये याद रखना है, लाइक इसका जो रिलेशन होता है वो होता क्या है। इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, रिजिडिटी मॉडुलस क्या होता है। एज आई हैव रिटन हियर यू कैन सी, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए इज द करंट वन, सॉरी करेक्ट वन, दैट इज 3 by eta plus 1 by b equals 9 by 1। Then which of the following corresponds to Maxwell's electromagnetic equation, that is del plus p is equal to epsilon naught mu naught del E by del T plus mu naught G, and yeah everybody knows this from where it comes from. So here the option A, that is Ampere's circuital law with the Maxwell's modification, is the correct one. Then the residue of f of z is equal to z cube by z minus 2, z minus 3, z minus 1 whole to the power 4 at z equals 3 is, तो हमें इसका रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या बताया, रेसिड्यू ऑफ एनी फंक्शन f of z where z is equal to a, ठीक है। तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a f of z। तो हम जब हमें यहाँ पे गिवन है कि z इक्वल्स 3, दैट इज हियर वी विल पुट इन प्लेस ऑफ a इक्वल्स 3। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर रहेगा वो होगा 27/16। सो हियर ऑप्शन सी 27/16 इज द करेक्ट वन। देन मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कैन ऑकर इन, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस होती क्या है। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस इज अ phenomenon where the magnetic flux density B lags behind the applied magnetic field strength H when the magnetic material is magnetized and then demagnetized। Okay, तो ये बेसिकली कहाँ पे होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे। So here the option C is the correct one. I hope you enjoyed this session. So for more videos, please do like, share and subscribe. Thank you.